Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं आर्थिक मामलों के जाने माने विश्लेषक और वरिष्ठ अर्थशास्त्री डॉक्टर एसपी शर्मा। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। वार्म वेलकम डॉक्टर शर्मा। थैंक यू सर। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Domestic stocks log gains of more than 0.5%. Sensex closes above 60,600 points. Nifty settles near 17,900 level. The rupee closes at 81 rupees and 84 paise against the US dollar, and Brent crude trades at $77.72 per barrel. घरेलू शेयर बाजार में लिवाली रही आज तेज। प्रमुख सूचकांक आधा प्रतिशत से अधिक बढ़त के साथ हुए बंद। सेंसेक्स 60,600 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी भी 17,900 के ऊपर पहुंच गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 81 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $77.72 प्रति बैरल पर आई। आज लिवाली तेज रही और सेंसेक्स तथा निफ्टी दोनों 0.5% से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 60,600 के स्तर से ऊपर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,900 के ऊपर आकर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच निवेशकों ने आज लिवाली की। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 349 अंक यानी 0.58% बढ़कर 60,649 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 102 अंक यानी 0.57% बढ़कर 17,915 दर्ज हुआ। विस्तारित बाजार की ओर चलें तो मिड कैप इंडेक्स में 0.5% की वृद्धि हुई, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.6% ऊपर आ गया। The key domestic indices today logged gains of more than 0.5%. Index of top 30 companies at Bombay Stock Exchange, Sensex closed above 60,600 points, while Nifty index of top 50 companies at the National Stock Exchange settled near 17,900 level. Both stocks added amid mixed global cues. Sensex added 349 points or 0.58% to finish at 60,649. The Nifty at the National Stock Exchange also rose 102 points or 0.57% to end at 17,915. In the broader market at the BSE, the mid-cap index rose 0.5% and the small-cap index added 0.6%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 23 firms rose while 7 fell. Bajaj Finance was the top gainer as it surged 2.4%, followed by Bajaj Finserv, which climbed 1.9%. Bharti Airtel rose 1.6%. On the other hand, Hindustan Unilever plunged 1.5% and Power Grid slumped 1.1%. Axis Bank fell around 0.8%. In sectoral indices at BSE, all the sectors were positive except two sectors. The Realty Index gained 1.6%. Telecommunications and Information Technology both added 1.2% each. Tech sector surged 1%. On the other side, Power sector declined 0.2% and Service sector slipped 0.1%. The overall market breadth was positive as shares of 2,025 companies advanced, while those of 1,458 companies declined. A total of 131 shares
remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 81 रुपये 84 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 0.1% घटकर 101.37 पर चल रहा था। एसपी जी, कार्यक्रम में मतलब आपका स्वागत एक बार फिर से है और हम समझना चाहेंगे कि बाजार में आज की जो लिवाली रही है उसके पीछे प्रमुख कारक क्या सब रहे। देखिए, जो इंडिया की मार्केट है तो जैसे हम बात करते हैं कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है और कई बार ऐसे ग्लोबल हेडविंड्स रहते हैं जिसकी वजह से मार्केट्स के ऊपर कुछ प्रभाव आता है, वॉलेटाइल रहती हैं मार्केट्स या फिर डिसेलरेट करती हैं। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है मार्केट्स की वो बहुत अच्छे से काफी स्ट्रांग है। तो अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज था हमारे पास कि इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी बहुत हाई थी और जिस वजह से मार्केट्स काफी इम्पैक्टेड थी और मार्केट्स में कुछ अनसर्टेनिटी भी टाइम टू टाइम रही है, जिसकी वजह से जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो रशिया यूक्रेन का युद्ध और उसके बाद जो रेट हाइक्स हुए, अब इन सब चीजों में कुछ जो स्टेबिलिटी है वो नजर आती है। जैसे कि इन्फ्लेशन काफी पीक रेट से काफी नीचे आ गया है। WPI इन्फ्लेशन तो बहुत ही अच्छे से डिसेलरेट हुआ है, जो कि लगभग कोई 1.5% के आसपास आ गया है और CPI में भी 6% के नीचे से जो अभी इन्फ्लेशन है देखा गया है अभी रिसेंट मंथ में। तो और जिस तरीके से जो ग्लोबल हेडविंड्स थे, जो रशिया यूक्रेन वॉर के चलते जो काफी जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इम्पैक्ट हुए और जो करेंसी के ऊपर जो अनसर्टेनिटी बनी, तो उन चीजों में भी कुछ अभी स्टेबिलिटी दिखाई देनी शुरू हो गई है, क्योंकि इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ है, इंडिया एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी है। तो जिस वजह से जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आती है ग्लोबल मार्केट्स में, ग्लोबल इकोनॉमी में, तो इंडिया की मार्केट एक भरपूर जो अपना अपसाइड है वो शो करती है, क्योंकि हमारे पास एक तो ग्रोथ है, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी इन द लार्ज इकोनॉमीज, इमर्जिंग इकोनॉमीज, और दूसरा जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनको हमने काफी हद तक अच्छे से उनको मेंटेन रखा है। जैसे इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी को हम अपने कंट्रोल में ले आए और हमारी डिमांड, अगर हम पैसेंजर व्हीकल जो एक मेजर ग्रोथ इंडिकेटर है, जो डोमेस्टिक डिमांड हमें बताता है कि किस लेवल पे हम ग्रो कर रहे हैं, तो उसी में अगर हम YOY ग्रोथ देखें, जो पिछले साल का YOY ग्रोथ था, तो लगभग कोई 15% से वो ग्रो किया, जो एक मेजर डिमांड इंडिकेटर है। मीन्स हमारी डिमांड इंटैक्ट है और जिस वजह से हमारी ग्रोथ है वो बहुत ही रेजिलियंट है। और इस साल भी जो ग्रोथ है वो लगभग कोई 6 और 7 के बीच में, लगभग कोई 6.5% के आसपास का जो हमारा ग्रोथ है वो इस फाइनेंशियल ईयर में भी रहेगा। लास्ट ईयर हमने जो एडवांस एस्टिमेट है उनके अनुसार लगभग कोई ग्रोथ जो है वो 6.9% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो कुल मिला के जो मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छे से इंटैक्ट है और साथ में जो ग्लोबल हेडविंड्स थे जो इंडिया की इकोनॉमी के लिए, उनमें स्टेबिलिटी आने के साथ साथ जो मार्केट्स हैं वो वापस मोमेंटम में आ गई है। और मैं तो समझता हूं कि अगर जो ग्लोबल परिस्थितियां हैं और स्टेबल हो जाती हैं तो मार्केट्स के पास बहुत अच्छा पोटेंशियल है एक न्यू हाइज बनाने का आने वाले टाइम में। Dr. Sharma, you mentioned that the market is very much ready to take things up now, and particularly I would like to ask you about the strength in the airline stocks, because there is data which says that Indigo, for example, actually has volumes. So both on the top line and on the cost front, there are tailwinds building up in short, medium term for the next 2 years. So how gung-ho are you about the airline stocks? Yes, that is a very positive move. I would say that after the recovery and rejuvenation of the economy, now the passenger movement is now again at the high level. Again, new highs are made by the passengers. So the airline industry is now is very much in the gung-ho, so that they are able to move forward with a great trajectory and supported by the so many reforms undertaken by the government during the last 2-3 years, which were for the rejuvenation of the impact of coronavirus and to come out from this crisis.
So going forward, I think as the global economy has opened up fully, and India is the fastest moving economy, and India is now participating more and more in the global economic environment. So the passenger movement domestically and internationally will remain intact, and the airline industry will rejuvenate to a high level. I think this will be the major growth driver of the services sector in India, one of the major growth drivers. So we have great hopes from this industry now. As earlier, before the corona, I think there were some issues, some survival issues, but now most of the things are settled with the lucrative policy environment by the government and the support of the government and the ease of doing business created for the airline industry during the last 2-3 years. डॉक्टर एसपी, यदि हम आज की गतिविधि पर ध्यान दें तो रियल्टी सेक्टर में हम अच्छी खासी बढ़त देख रहे हैं। 1.5% से अधिक की बढ़त हुई है आज इस सेक्टर में। कुल मिलाकर रियल्टी सेक्टर कैसा प्रदर्शन करता दिख रहा आपको आने वाले दिनों में भी, न केवल आज बल्कि पूरे एक साल भर का यदि हम देखें तो रियल्टी सेक्टर किस दिशा में जाता दिख रहा है आपको? देखिए, जो रियल्टी सेक्टर है उसमें मैं बताना चाहूंगा कि ये एक सदाबहार सेक्टर है। इसमें ये जरूर है कि कई बार थोड़ा साइकिल ऐसा रहता है कि कई बार थोड़ा कुछ इश्यूज आते हैं, चैलेंज आते हैं, कई बार हल्की स्लो डाउन भी रहती है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस सेक्टर को हम कभी ये नहीं कह सकते कि इस सेक्टर में अभी काफी देर तक मंदी चलेगी, क्योंकि जो डिमांड है वो डिमांड, जैसे मैंने पहले बताया कि पैसेंजर व्हीकल का जो डिमांड है बहुत ही इंटैक्ट है। उसी तरीके से जो रियल्टी का डिमांड है वो भी इंटैक्ट रहेगा, नॉट ओनली फॉर द इयर्स बट फॉर द डेकेड्स, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ने अभी तो इंडिया की इकोनॉमी ने एक हाई रोड पकड़ी है। जैसे कि आने वाले जो 25 साल है, जो ये अमृत काल हमारा चल रहा है और हम 100 इयर्स पूरे करेंगे अपनी आजादी के 2047 में, और जिस तरीके से अनुमान है कि इंडिया की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 20 ट्रिलियन, 30 ट्रिलियन और इवन के 40 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनेगी, तो उस तरीके से जिस तरीके से लोगों को इनकम लेवल इंक्रीज होंगे तो उनकी डिमांड फॉर हाउसिंग, डिमांड फॉर ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो जिससे कि रियल्टी सेक्टर में बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाले टाइम में रहेगी और ये बहुत ही ब्राइट सेक्टर है। एसपी, यहाँ पर एक हम यानी ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहेंगे। आपने पैसेंजर व्हीकल्स की चर्चा की, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि पैसेंजर व्हीकल में पहले हम एक ट्रेंड देखा करते थे कि जो छोटी गाड़ियां होती थी, मिड साइज की गाड़ियां होती थी, उनकी बिक्री अपेक्षाकृत बहुत अच्छी हुआ करती थी, उनका बाजार बड़ा हुआ करता था। वहां क्या स्थिति है और वह उस क्षेत्र का प्रदर्शन क्या दर्शा रहा ओवरऑल इकोनॉमी के लिए? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि पहले जिस तरीके से हम बात करते थे छोटी गाड़ियों की या फिर 2 व्हीलर्स की डिमांड जो है वो काफी इंटैक्ट थी, तो अभी डिमांड वो अभी भी इंटैक्ट है और साथ में अभी जो शेयर है, जो बड़ी गाड़ी का जो रुझान है, खासकर के जो Tier 1 एंड Tier 2 सिटीज में जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी है। कुल मिला के उसी वजह से जो ग्रोथ है, YOY ग्रोथ बहुत अच्छी है। और अगर हम लेटेस्ट डेटा भी देखें तो वो भी जो अभी रिसेंट मंथ का जो डेटा है, जो मार्च का डेटा है, वो भी बहुत अच्छा है। लगभग कोई 3 लाख के आसपास का जो ग्रोथ जो सेल्स हुआ है अगर हम कुछ कंपनीज का देखें, तो कुल मिला के जो एक जो डिमांड है, डिमांड एक मेजर ग्रोथ ड्राइवर है। जो चाहे वो हम रियल्टी सेक्टर लें, चाहे वो हम ऑटो सेक्टर लें, चाहे वो हम जो दूसरे सेक्टर हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक बहुत ही जबरदस्त रुझान है, जिसमें आप देखेंगे कि जो इंफ्रा से रिलेटेड शेयर्स हैं उनमें काफी अच्छा मोमेंटम रहता है, क्योंकि सरकार का फोकस इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना है 2047 तक। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड एक हाई लेवल पे रहेगी और सरकार ने जो NIP नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो अनाउंस की 3-4 साल पहले, जिसके तहत सरकार बहुत बड़े जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, जो सरकार आगे जो रेल, रोड, पोर्ट, एयरपोर्ट के ऊपर जो रुझान है वो बहुत इंटैक्ट है। और भारत अभी इन सब चीजों के देखते हुए बदला हुआ नजर आता है। जब भी हम कहीं जाते हैं तो नए जिस तरीके से रोड डेवलपमेंट और जो रेल में जो
आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है वो अडॉप्ट की गई है, तो एक विजिबिलिटी जो है वो सामने आ रही है। और ये अभी एक शुरुआत है जो हम एक डेवलप्ड इकोनॉमी तक, एक बहुत बड़े लेवल तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहते हैं। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जो हमारा जो सेक्टर है, एवरी सेक्टर इज अ प्रॉमिसिंग सेक्टर। बहुत सारे जो, क्योंकि हमारे जो सेक्टर्स हैं वो उसमें बहुत सारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स भी हैं, उसमें टेक्नोलॉजी इंटेंसिव सेक्टर्स भी हैं, उसमें कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स भी हैं। तो टोटल कुल मिला के हमारे पास एक डाइवर्स जो प्रोफाइल है इकोनॉमी का, वो हमें बहुत अच्छी जो एक ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन देता है, और जिसकी वजह से हम बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन, जैसे कि हमने इसी वर्ष में अगर हम देखें जो अभी खत्म हुआ है 2022-23, तो हमने लगभग कोई $770 अरब का एक्सपोर्ट किया, सर्विसेज को और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स को मिला के, जो बहुत बड़ी चीज है एक डिफिकल्ट एनवायरनमेंट में। जबकि एक रशिया यूक्रेन का युद्ध भी जो पिछला वित्त वर्ष उससे पहले शुरू होने से पहले 1 महीना पहले शुरू हो गया, और जो डिमांड थी बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड थी, और जो करेंसीज थी बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड थी, और जो ओवरऑल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट था, जैसे कि अनसर्टेनिटीज कभी बैंकिंग सेक्टर की तरफ से, कभी ग्लोबल जो प्लेयर्स हैं उनकी, मतलब टोटल कुल मिला के बहुत ही डिफिकल्ट एनवायरनमेंट था, फिर भी हम उसमें अपना एक न्यू हाई एक्सपोर्ट्स में बना पाए। तो कुल मिला के मैं समझता हूँ कि सभी सेक्टर्स ही प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, उसमें वॉलेटिलिटी की वजह से इम्पैक्ट आता है, और थोड़ा सा कुछ मार्केट्स के ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट्स, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जल्द जो असर होता है, जो कंटेंजियन इम्पैक्ट है वो जल्दी ही मार्केट्स के ऊपर आता है, तो मार्केट्स कई बार थोड़ी वॉलेटाइल होती हैं। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज बहुत ही बढ़िया हमारा मार्केट्स का और हमारे जो So Dr. Sharma, what you're saying is that there is positivity in all the sectors. I have a question that since 2019, the consensus in the market was that we only wanted large-sized banks. We only wanted banks which could manage costs and which could manage a bit of, slippage or the little bit of NPAs here and there. Do you think that is changing now, and today smaller banks is where the valuations are attractive? Yes, I am totally agree with you, because the earlier years, like the years before the coronavirus, the economic environment and economic thoughts were different from now, because that was totally different environment, and we were moving in tandem, and we had thoughts that we should focus more on the few banks, and there must be merger of the banks, and that will work, and there must be large institutions. But now after the coronavirus, the focus is now on the mid-sized and small-sized companies also, whether the banking or manufacturing or services or health sector. Because these are the growing sectors and they have much potential as compared with the large conglomerates, and they are able to provide more and more job and employment opportunities to the growing young population. So that's why the focus must remain on the MSME sector going forward, because this is the sector which will become which is a major growth driver of the economy, whether in the banking sector or in the real estate sector or in the pharmaceutical sector or in the textile sector or in the IT sector. These companies are moving ahead with a great growth momentum, and they are participating more and more in the economy. So I think the reforms must continue, and the reforms must go hand in hand with the growth of such sectors, and I can do more, and they have potential to excel in the market in the coming times. Okay, and coming back to today's market, it seems that both price and momentum indicators are now in sync, and they suggest that the current rally is likely to continue. Are you in agreement with that? Yes, I am totally agreement in that, because now these companies are becoming more and more resilient, because they have learned a lot from the coronavirus and thereafter the crisis of the Russia, Ukraine, how to survive in the market, and they are now becoming more and more resilient, which is showing the
resilience of at the macro level of the Indian economy, that despite the headwinds, despite so many difficulties, we are growing at around 7%, and we have expectations that we will again grow at around somewhere between 6.5 to 7%. That is the reflection of our institutions, reflection of our businesses, and reflection of our policy environment, that we have strength to move forward with a great resilience and a great momentum and to shine more in the global marketplace. आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज सिंगापुर को छोड़कर अन्य सभी प्रमुख बाजारों में लिवाली दिखी है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स और दक्षिण कोरिया का कोस्पी दोनों सूचकांक 0.5% लाभ के साथ बंद हुए। जापान के निक्केई 225 सूचकांक में 0.2% की वृद्धि हुई। हांगकांग का हेंग सेंग 0.4% लाभ में रहा। उधर बिकवाली के दबाव में सिंगापुर का स्ट्रीट्स टाइम्स इंडेक्स 0.4% घाटे के साथ बंद हुआ। यूरोपीय जोन की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां मिला जुला रुख दिख रहा था। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.8% घाटे में था। फ्रांस की CAC 40 में 0.3% की वृद्धि दिख रही थी, जबकि जर्मनी का डेक्स 0.07% की मामूली बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। U.S. stocks wavered to a mixed close yesterday as tech strength boosted the Nasdaq, while weak economic data and ongoing wrangling in Washington over the debt ceiling weighed on cyclicals and on the dollar. The Dow Jones Industrial Average fell 0.7% and the S&P 500 declined 0.4%. On the other hand, the Nasdaq Composite added about 0.5%. Dr. Sharma, the U.S. Composite PMI, including services, has been below 50 for 7 out of 8 months. Is it not indicative of a recession? Yes, I totally agree, because now the U.S. economy is once again facing the headwinds of the growth trajectory, and now they have to take measures which are growth proactive measures for the growth momentum. So I think this is a challenging and worrying situation for the U.S. economy at this juncture, because dollar is also not in that much strength, and they have to support the economy with the calibrated steps to move forward as the services and manufacturing and the employment creation in the economy becomes important, because this is the leading economy and this is the largest economy in the world economic system, which provides a lot of direction to the world economy. So I believe the focus must be on for the manufacturing processes and the services sector growth, so that they are able to create and maintain the employment scenario in the country, and the stability in dollar is also important for the world economy to move forward and to create a stable macroeconomic environment. So, and what about the U.S. GDP quarterly growth data, which we are expecting today, later in the day? So you think, what kind of results are you expecting from there? I think the data for the United States, as projected by IMF, U.S. grew at around 2.1% in 2022, and the projections for the 23 are overall projections are 1.6%. So U.S. economy will not grow in tandem with the earlier growth rate of the 2022. So growth will decelerate. That is not in favor of the overall U.S. economy for the employment scenario. So I think they have to support the economy with the calibrated steps, as I mentioned earlier, that growth is decelerating significantly from the level of 2022, and projections for the next year going forward for 2024 are also not that much promising. The economy will grow at the rate of 1.1% only in 2024. So all these projections by the International Monetary Fund are indicating a worrying situation in the largest economy in the world economic system. ऐसे में कह लें अमेरिका में जब आसार ऐसे हैं, तो हमारा निर्यात जो कह लें अमेरिका को होता है, उस पर कैसा असर दिख रहा आपको?
देखिए, जो ये जरूरी नहीं है कि जब आपकी ग्रोथ रेट डिसेलरेट हो रही है तो आपका जो डिमांड है उसके ऊपर भी उतना ही असर पड़ेगा जितना कि आप इंपोर्ट करते हैं, तो थोड़ा असर रहता है। लेकिन जो डिमांड फॉर कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स, जैसे कि भारत एक अच्छे कंपेटिटिव प्राइस पे यूएस को सप्लाई करता है और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अच्छा है और वी आर इन सरप्लस, तो मैं समझता हूं कि उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो यूएस का डिमांड जो प्रोडक्ट इंडिया से वो चाहते हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। उनमें स्लो डाउन की वजह से थोड़ा बहुत असर रहेगा, लेकिन कोई बड़ा सिग्निफिकेंट असर आने वाला नहीं है। और दूसरा, जो हमारे पास जो न्यू मार्केट्स हैं, जैसे कि हमारा जो एक्सपोर्ट है जो मिडिल ईस्ट इकोनॉमीज की तरफ, यूएई की तरफ काफी अच्छे रुझान के साथ बढ़ रहे हैं, और कुछ अदर इकोनॉमीज जो यूरोपियन इकोनॉमीज में हम काफी अच्छी मारियत हम अच्छा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो हमारा एक्सपोर्ट है उसके ऊपर कोई मेजर इम्पैक्ट आने वाला नहीं है। ये जरूर है कि थोड़ा कंपैरेटिव जो स्लो डाउन है वो जरूर रहेगी, बट वी विल बी इन दी पॉजिटिव ग्रोथ रेट for the current year also. Moving on, the Ministry of Finance has said that total enrollment under the Atal Pension Yojana, APY, has crossed the 5 crore 20 lakh mark as on 31st of March this year. The scheme enrolled more than 1 crore 19 lakh new subscribers in the financial year 2022-23 as compared to 99 lakhs in the last financial year, depicting a growth of more than 20%. The ministry said that as of date, the total assets under management in APY are more than 27,200 crore rupees, and the scheme has generated an investment return of 8.69% since inception of the scheme. The ministry said that in the public sector banks category, 9 banks achieved the annual target, while the Bank of India, State Bank of India and the Indian Bank sourced more than 100 APY accounts per branch. Under the regional rural banks category, 32 banks achieved the annual target, while Jharkhand Rajya Gramin Bank, Vidarbha Konkan Gramin Bank, Tripura Gramin Bank and Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank sourced more than 160 APY accounts per branch. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब नजर डालते हैं सर्राफा बाजार पर। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 300 रुपए बढ़ोतरी के साथ 60,195 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। मई में आपूर्ति की जाने वाली चांदी 481 रुपए बढ़ोतरी के साथ 74,321 रुपए प्रति किलो पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर चलें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत था, $2,008.30 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी भी मजबूती के साथ $25.34 प्रति औंस पर चल रही थी। And in oil, the intraday trade, Brent crude was trading at around $77.72 per barrel. West Texas Intermediate crude was at $74.29 per barrel when reports last came in. Dr. Sharma, oil prices were steady today after a price drop the previous day, and it has reversed the supportive impact of a previous OPEC production cut that was announced this month. What could be the impact in coming days? Yes, because now the dollar is also weakening, so that's why the commodity prices, particularly the crude oil, which is a leader in the commodities, is moving up and impacting the scenario of the emerging economies, currencies also. So I think, but the prices at the higher level will not remain strong, because global growth is projected in a deceleration trajectory. Global growth was earlier 2.7% in 2022. Now the 3.4% in 2022. बस यहीं पर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर शर्मा। Thank you for being with us, Dr. Sharma. And before we close the headlines once again, key domestic indices logged gains of more than 0.5%.
Sensex closes above 60,600 points. Nifty settles near 17,900 level. The rupee closes at 81 rupees and 84 paise against the US dollar, and Brent crude trades at $77.72 per barrel. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.